हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ संतोष सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MCO 04 टी एग्जामिनेशन फरवरी 2021। राइट, हो सकता है इस साल भी यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस स्ट्राइक कर जाए एग्जाम्स में, तो इनको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, why is foreign capital so important for India's economic development? Point out the important policy changes announced by the government to attract the foreign capital since 1991. ठीक है, and given the choice between FDI and FII investments, which one will you prefer? Give reasons for that. तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन मैंने मेरे प्रीवियस जो वीडियो है जून 2021 के सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट से, FDI से, इन सब से क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इनको रिवाइज करना है ये चैप्टर्स। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ही फैक्टर्स हैं जिसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। राइट, इसका सॉल्यूशन मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कंपोज किया हुआ है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ ए फर्म एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर वन ऑफ देम। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, राइट, जिसको आपको पॉइंट आउट करना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये आपके क्वेश्चन में है, ये तीनों फैक्टर्स। इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूड नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट्सेट्रा। ये सारे इकोनॉमिक कंडीशंस में आ गए। Like that, economic policies include industrial policy, monetary policies, fiscal policies, etc. So all these are concerned with policies. Then economic systems include capitalism, socialism and mixed economy system, right? ये भी clear है. And the nature of infrastructure available in an economy also affect the economic environment. Economic environment also include economic index or indices such as national income, per capita income, GDP, GNP, savings, investment, foreign trade, BOP, etc. And economic reforms introduced in 1991 has changed the economic environment significantly. फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चंस आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ इसके बारे में, तो इसको आपको अच्छे से करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ही है और आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इसका जैसे यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिखा हुआ है, this environment leads to creation of wealth, economic growth and economic development, whereas non-economic environment indirectly affect the economic growth and development of a country. And economic environment include economic conditions, policies and systems, whereas non-economic include political environment, social and cultural environment, technological environment, legal environment, like that. And economic environment depends on non-economic environment for its smooth operation, whereas non-economic environment is a very wide scope, wide concept. Let's move on to the next question. This is question number 3. Define small scale sector. Discuss the institutional framework that has been evolved for the promotion and growth of small scale sector in India, and what are the major constraints that are still being faced by it. ठीक है, नाउ क्वेश्चन को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ SSI, देन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू प्रमोट SSI,
एंड देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एसएसआई। इसका आंसर भी मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बहुत बार दिया हुआ है, एक बार वापस रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। ओके, SSI are those industries which produce goods and services with the help of relatively smaller machines and few workers, right? And investments is between 25 lakhs to 1 crore for manufacturing industries. This may be sole proprietorship or partnership. These are managed by owners himself. These SSIs generally operate at local or regional level, and these are labor intensive industries. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ से छोटी मशीन यूज़ करते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट भी छोटा है, 25 lakhs to 1 crore, एंड जनरली ओनर हमेशा खुद ही इसको मैनेज करता है। सो लाइक दैट। नाउ इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में मैंने यहाँ पे 4 का मेंशन किया हुआ है, लाइक सिडको, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आता है फ्रेंड्स, तो इसको बहुत ही आपको ध्यान देना है। सिडको आर स्टेट ओन्ड कंपनीज एस्टेब्लिश्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एसएसआई, ठीक है। हर स्टेट में सिडको आपको मिलेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू एसएसआई, ठीक है, ये भी क्लियर है। एंड देयर मेन एम इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, जिसको हम लोग स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स भी बोलते हैं, तो उनको प्रमोट करना, ठीक है। टू प्रमोट स्किल्ड लेबर थ्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दे जनरली एस्टेब्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वेयर द एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कैन डू ट्रेनिंग, ओके। They provide technical assistance to entrepreneur, especially women, right? And they also provide help, advices, assistance in marketing activities. So this was Sidco. Let's move on to the next one. And this is SISI, Small Industries Service Institutes. These are set up in one each state to provide consultancy. Again, all India में सारी states में हैं, and there are 28 SISIs and 30 branches set up in the state capitals, right? तो सारी state की जो capitals हैं वहाँ पे आपको SISI की branch मिल जाएगी. It provides training to small entrepreneurs. It provides skill development training, right? And it also provides technical and managerial consultancy to emerging entrepreneurs. And it conducts service in the targeted areas, and it provides program for modernization, conservation of energy, quality control, pollution control, like that. So okay, so let's move on to the next one. National Small Industries Corporation, NSIC. Now इसके कुछ key sentences देख लेते हैं। Their main object is to supply machinery on easy hire purchase terms to SSI, ठीक है, small scale industries, and they also provide marketing facilities in both domestic and international level, ठीक है, to supply raw materials at reasonable prices, right? Then they also provide loans at reasonable and on easy terms to small scale industries. And some of the major schemes launched by NSIC are composite term loan schemes, integrated marketing support, raw material assistance, and like that. Okay, तो ये हो गई NSIC। आगे बढ़ते हैं, and this is SIDBI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। Okay, it was established under the Special Act of Parliament 1990, and its main object is to promote MSME, that is micro, small and medium enterprise. ये भी बहुत popular है, this SIDBI, and it also provides funds to MSME on easy terms to grow and expand their business. It provides different types of loans like microfinance, direct finance, etc. That is in terms of mudra loan जिसको बोलते हैं. Now
ये मुद्रा लोन अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बैंक्स में. It also provides marketing services to SSIs, and it also promotes self-employment programs. ठीक है? And it advises on modernization, technological upgradation, like that. And it also helps women entrepreneurs through schemes like Mahila Udyam Nidhi, Mahila Vikas Nidhi, like that. So this was question number 3. And let's see the main constraints or problems faced by SSIs. First one is shortage of raw materials. This is one of the most important problem for small scale industries. उनके पास में रॉ मटेरियल सफिशिएंट नहीं होता या रेगुलर सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से बंद पड़ जाते हैं. देन लैक ऑफ फाइनेंस, ये भी मेजर प्रॉब्लम है. फंड्स नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते वो लोग. Okay, and then lack of technology and skills. Latest technology use करने के लिए you have to spend a lot. And again sometimes the entrepreneur is from middle class family, तो उसके हो सकता है कि he doesn't have that skills of an industrialist. Then problems of marketing, lack of infrastructure facilities like roads, power, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम. तो बहुत सारी SSIs जहाँ गांव खेड़ों में है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है. देन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन MNCs they are producing they are marketing their goods and services at a very cheaper price, so they cannot compete with those MNCs. So that is one problem. Okay, fine. Let's move on to the next question, and this is state the regulatory policy measures prevalent till mid 80s in India and outline the changes made through reformist policy package of July 1991. Just now I told you about this. This July 1991 was a very important year in India. इसके पहले देखते हैं इंडिया में पोजीशन सिचुएशन कैसी थी. Basically this regulatory, that means regulations, economic regulations, public interest regulations and environmental regulations. तो इस तरीके से मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. Economic regulations aims at preventing market failure. It includes all those policies which help the market run smoothly. And the important economic regulations include the Foreign Trade Act, which help in international trade, the Electricity Act, that means the state government can collect the tariffs on electricity, like that. Public interest regulations. These regulations include keeping industries up to date. This means maintaining the standards of industries so as to keep society safe and healthy. For example, Bureau of Standards, BIS. And then environmental regulations include, all the acts, all the policies towards preventing pollution. Now reforms. Basically ये 3 चीज़ हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसके बारे में आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा है. वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन. Discuss the concept of corporate governance and state the various measures adopted in India to ensure good corporate governance. Okay, let's see what is corporate governance. It is a set of rules and regulations used by a company or firm to control and direct its activities. ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी के पॉलिसीज, रूल्स, सिस्टम्स जो वो यूज़ करती है. Okay. The board of directors frame these rules and systems, right? And the 4 P's of corporate governance are people, process, performance, and purpose. That's very clear. And the main object is to provide uniform systems of working for everyone and for stakeholders. Stakeholders means all the interested parties, like shareholders, creditors, suppliers, bankers, like that. And a company should be managed
in the best interests of its stakeholders. Stakeholders का जो interest होगा कंपनी को वैसा ही काम करना चाहिए, so that their confidence is maintained. And it establishes order between the owners of the firm and top level managers. So like that. Let's move on to the next part of this question, that is the measures for good governance. एक अच्छी governance के लिए कंपनी को क्या मेजर लेना चाहिए? First, it should have accountability and responsibility. रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि the employees can be made accountable and responsible. Management and workers, both. Then recognition of stakeholders' rights, जो shareholders के या interested parties के जो rights हैं, powers हैं, तो उनका भी recognition होना चाहिए, वो भी clearly define होना चाहिए. Then financial security and control, right? तो ये भी चीज़ understood है. Then transparency or openness. So this governance should be transparent. यहाँ पे कोई red tapeism, favoritism का कोई space नहीं है, ठीक है? It should be, all the workers should be treated equally, and all the rules, policies should be equal for everyone. Then it should have legal compliance. It should be framed according to the prevailing laws and order in the country. Next question की तरफ चलते हैं. And this is discuss the significance of money market in a modern economy and explain the principal constituents of money market and their functioning in India. ये भी important question है. Money market तो important है, हो सकता है इस साल भी एग्जाम में स्ट्राइक करे. एंड पहले समझते हैं मनी मार्केट क्या है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. इट enables a companies, banks to fund their cash flow needs by selling their various securities. Investors buy these securities to earn money. It meets the short-term fund requirement of a company. The major instruments traded here are bills of exchange, treasury bills, commercial paper, like that. And money market is a network of financial institutions dealing in short-term funds. ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ओनली शॉर्ट टर्म फंड्स की ट्रेडिंग होती है, राइट? ओके. द मेन पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट आर कमर्शियल बैंक्स, इंडिजीनियस बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एट्सेट्रा. तो ये कुछ थे मनी मार्केट के इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स. एंड लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट इन इंडियाज़ पर्सपेक्टिव. ओके, मनी मार्केट का सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया. इसको और थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. ठीक है, कैपिटल मार्केट दैट मीन्स स्टॉक मार्केट. Then it helps in the smooth functioning of commercial banks. That's understood. It helps RBI, Reserve Bank of India, to control other banks. उनके operations को control करने में help करता है money market. And it helps to frame the suitable monetary policy. CRR ratio, SLR ratio. तो ये सारे बनाने में, frame करने में काफ़ी help करता है money market. Then it is the major source of finance to the government. ये चीज़ आपको ध्यान देनी है. The next, the main constituents of money market. ये सबसे important question, very very important question, जिसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है मनी मार्केट का. ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी मार्केट, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट एंड कमर्शियल पेपर. चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले समझते हैं ट्रेजरी बिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. दीज आर इश्यूड बाय आरबीआई टू मीट शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स. दीज आर इश्यूड फॉर ए पीरियड यूजुअली 3 months. मैच्योरिटी पीरियड है 3 months. These instruments carry 4.6% rate of interest per annum, and these are mostly secured and trusted, right? Because they are all issued by
the RBI itself. And these are readily liquefied by RBI through discounting or repurchase. So that was treasury bills. Then call money market. Here maturity period varies between 1 day to 14 days. It deals in overnight funds. It is highly liquid asset. जब चाहो तब इसको कैश कर सकते हैं हम लोग. It is affected by seasonal variations. It helps banks to manage short-term fund needs and rate of interest changes many times during a day. So these were few important sentences on call money market. Now repo rate. Securities are sold to an investor with an agreement to repurchase them at a predetermined rate and time. ठीक है, सिक्योरिटीज बेचते हैं इन्वेस्टर को, एग्रीमेंट बनता है कि कुछ टाइम के बाद में उनको वापस खरीद लिया जाता है, लाइक बाइंग बैक ऑफ शेयर्स. व्हेन सिक्योरिटीज आर बॉट विथ एन एग्रीमेंट टू रीसेल देम, दैट इज कॉल्ड रिवर्स. इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे सेल किया जाता है, यहाँ पे बाई किया जाता है. तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ये मेन डिफरेंस है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, कमर्शियल पेपर. CP was introduced by RBI in 1990 to raise money for short term. These are unsecured promissory notes. Maturity period varies from 3 months to 6 months. Okay. The value of CP are generally multiples of 5 lakhs and the minimum value is 25 lakhs. And commercial paper carries high rate of interest in comparison to treasury bills and call money market. And the issuing company must have at least a net worth of 5 crore to issue commercial paper. ये क्वेश्चन फ्रेंड रिपीट हुआ था. What is privatization? Why is it considered necessary today? Explain the possible areas of privatization and point out the problems associated with it. तो ये भी हर साल आता है. आप इसका सॉल्यूशन मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेट द मेन प्रोविजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आपको रिवाइज करना है. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, देखते हैं ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था. इसके मेन फीचर्स, प्रोविजंस क्या थे. द एक्ट वाज पास्ड रिप्लेसिंग MRTP एक्ट. MRTP मीन्स द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट. इसको रिप्लेस करके इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था. द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया. वो सारी कंपनीज जो कॉम्पिटिशन को रोकती है उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना. ठीक है. टू प्रमोट फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन इन इंडिया, टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, and AAEC agreements are regarded void. Now AAEC means appreciable adverse effect on competition. Any such agreements which reduces competition, they are called AAEC agreements. So all these agreements were made void, null. Okay. Next, explain briefly the various approaches to social accounting and reporting. सोशल अकाउंटिंग के ऊपर भी हमेशा हर साल क्वेश्चन आता ही रहा है, तो ध्यान से देखना है. सोशल अकाउंटिंग एम्स टू मेजर एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फर्म एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी. नाउ इसके अप्रोचेस, यहाँ पे मैंने 5 अप्रोचेस लिखे हुए हैं फ्लो चार्ट में. क्लासिकल अप्रोच, descriptive approach, integral welfare approach, program management approach and pictorial approach. Now according to classical approach, it is a social responsibility of business to use resources to earn profits by keeping itself within the legal and ethical framework of the society. सोसाइटी के जो एथिक्स हैं, जो लॉज हैं, उनके अंदर में रह के अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है. सो दिस वॉज क्लासिकल approach. Okay. The next one, descriptive. The social activities of a business is presented along with financial statements.
in a narrative form. Only positive activities of a firm are presented. Okay. Then integral welfare. According to this approach, a firm should prepare a social report consisting of social benefits and social costs. Program management. Every firm has a definite social program and plan to achieve the objectives towards society, and the feedback and control should be exercised and disclosed to the society. Then pictorial approach. Under this approach, photos of healthcare centers, schools, hospitals run by the company are presented in the annual reports so that the society becomes, can change their views. The next one, short note, Environmental Protection Act 1986. Again, MCO 04 का important question है, very important. इसके कुछ key sentences. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को EPA भी बोल सकते हैं. इट वॉज पास टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. द एक्ट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. इट प्रोवाइड्स सेफ स्टैंडर्ड्स फॉर पॉल्यूटेंट्स. इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ हजार्डियस मटेरियल्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू lay down all the standards. It establishes laboratories at different places to check the air pollution. EPA imposes punishments, penalties who endangers the environment. It aims at sustainable development of the environment. Then it executes nationwide plan and programs on environmental protection. It implements the decision made at the UN Conference on Human Environment. So all these are very important. Okay. The next question is social cost benefit analysis. Right. इसको short में SCBA बोल सकते हैं. Now it is a technique, a tool, a method to determine merits of a project on the basis of current and future socio-economic impacts. And it is a systematic method of evaluating a project in terms of cost and benefits. It is primarily used for public investment projects, and the main focus is on economic benefits of the project and the impact of the project on the level of savings investment in the society. मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट और बेनिफिट इसको एनालाइज करता है ये कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका मेन जो February 20 का एग्ज़ाम्स का. एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, बिकॉज कल MCO 04 है. तो जैसे इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है. स्टॉक एक्सचेंज, इसके मेन फंक्शंस, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू इन्वेस्टर्स, कॉरपोरेट सेक्टर्स एंड सोसाइटी. और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एक्सप्लेन द वेरियस राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर. ये सारे क्वेश्चंस मैंने MCO 04 के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मतलब मिल जाएंगे, और मैंने उनको बहुत अच्छे से डिस्कशन भी किया है. तो फ्रेंड्स, MCO 04 इस वीडियो को लेके 4 वीडियोस हो गए, and I will request you to watch all the 4 videos for a very good and 100% preparation. Okay friends, that's all for the day, and see you in the next video, and a very best of luck for the ongoing examination.